Honorable member of the House, I call this House to order. Today is not the ordinary day in the history of the school. For the first time, we are witnessing a legislative assembly session with our institution, a space where students spend into the role of the lawmaker, leaders and the responsible citizen. The House represents more than speeches. It represents democracy, discipline, dialogues and duty. Honorable member of the House, Parliament and the Legislative is the heart of the democracy. It is the where ideas and debates, differences and respect the decisions and taken for the greater goods. To the member of the House, you are not mercy students today. Honorable members, the House is now in session. I respect discipline and respect for the Legislative Assembly. No members shall speak without the permission of the Chair. The Chair now recognize Honorable Aaliya Fatima Darhal Madiha Rasool. You have the floor. Speak to the point. Respected Speaker, Sir, Honorable other MLAs. I, Madiha Rasool, standing as a representative of Darhal constituency, not to just speak, but to raise the voice of my people. My constituency, Darhal is full of hardworking, honest and talented peoples. Yet it struggles for the basic facilities of life. Our biggest problem, and the one I strongly rise in this house, is the poor healthcare system. Even though we have a sub-district hospital at Darhal, but we don't have enough doctors, nurses, even we don't have diagnostic machines. Tell me, Honorable Speaker, Sir, how can a mother save her sick child if the hospital has no doctor? How can a poor man survive when he must travel hours to Rajouri just for a blood test? Respected Speaker, Sir, this is not just a problem. This is the failure of the system. I, Madiha, say it loud and clear. Healthcare is not a luxury, it is a right. And as a MLA of Darhal, I demand immediate action to strengthen our hospitals, appoint more medical staff and provide modern diagnostic machines. Another demand, the bill of Shakarmaran project was also tabled in the Parliament in the 14th Lok Sabha. It was debated on, but still it is in the doldrums. Similarly, a ropeway project from Budkhanai to Shakarmaran was also sanctioned, but the work has not been started. Respected Speaker, Sir, in my constituency Darhal, there is no public park where elders can sit peacefully as children can play. I strongly urge the government to create a public park in my area. But that's not all. Our roads are broken, our youth are jobless, our school lack teachers and labs. We don't want sympathy, we want solution. Our young generation doesn't need promises, they need opportunities. I ask a question to CM. If you can develop our area, then come and see how strong and united the people of Darhal are in their hope for change. My voice today represents thousands of unheard voices from hills and valleys. And I promise, as long as I hold this position, I will fight for every single right of my people. Thanamani Darhal will rise and shine, because together we can turn neglect into progress and dreams into reality. The Chair calls upon Honorable MLA of Surankot, Aaliya Fatima. The host will hear you in silence. Go. Honorable Speaker and esteemed colleagues, I am Aaliya Fatima, representing the Surankot constituency, and I rise today to bring to your attention the pressing concerns that plague you our constituency. Dear Speaker, the state of our infrastructure is a significant impediment to our progress. I urge the government to prioritize building more roads, bridges and public transportation system. This will not only enhance connectivity, but will also boost economic activity in the region. Worthy Speaker, the healthcare sector in Surankot requires immediate attention.
Our hospitals lack essential medical facilities and the shortage of doctors and medical staff is alarming. I request the government to allocate sufficient funds to upgrade our healthcare infrastructure and incentivize medical professionals to serve in rural areas. Dear Speaker, it is said that education is the backbone of our nation, and it is disheartening to know that our schools and colleges face numerous challenges. I appeal to the government to focus on improving the quality of education, providing necessary infrastructure and supporting our teachers. Worthy Speaker, Sunakot tourism potential remains untapped due to the lack of infrastructure and promotion. I request the government to promote our tourist infrastructure and promote our cultural heritage and create opportunities for local employment. Esteemed Speaker, natural disasters are a recurring phenomenon in our constituency, and it is our responsibility to show preparedness. I request the government to implement effective disaster management schemes and to provide compensation to those who are affected. If the government can't fulfill these needs of my people, this will be injustice to my people, and I'll keep raising my voice. Let us address these pressing issues and build a better future for the people of Sunakot. Thank you. Thanks a lot for listening. The chair grants permission to Honorable MLA of West Jammu, Ayaan Malik, confess yourself to the subject. Honorable Speaker, sir, I rise to speak on the behalf of the people of West Jammu. It is indeed a privilege to represent my constituency in this august home. Honorable Speaker, sir, West Jammu is full of potential, hard-working families and vibrant youth. Yet, like many parts of our state, it faces issues that demand urgent attention. Honorable Speaker, sir, I want to speak about administration failure and lack of accountability. Why do benefits announced for the poor not reach them on time? Why do benefits still run from office to office? Hospitals and quality schools. We must assure that every child of West Jammu receives proper education and every family receives timely medical support. Honorable Speaker, sir, West Jammu is a border area. When people were suffering due to firing and danger, The chair now recognize Honorable MLA of Nashara, Mohsin Malik. You may place your views before the House. Here you go. Honorable Speaker, sir, I rise to draw the attention of this House to the various development issues of my constituency, Nashara, which require the urgent attention of the government. Honorable Speaker, sir, the first issue of my constituency is employment and skill development. Unemployment among educated youth has become a serious concern. Every year, hundreds of graduates and postgraduates from Nashara complete their education. But yet, opportunities and pre-youth policy. I strongly urge the government to formulate new youth employment and entrepreneurship policy, specifically targeting rural and semi-urban constituencies like Nashara. This policy should focus on establishing skill development and incubating centers, providing startup and self-employment grants for young entrepreneurs. Honorable Speaker, sir, the second issue of my constituency is education sector. Many government schools are functioning without sufficient staff and basic facilities. I request to Education Department to fill teacher vacancies, upgrade infrastructure and introducing digital classrooms for better learning outcomes. In conclusion, sir, I would say that the people of Nashara, especially our young generation, are looking towards this house with hope. I request to government to take immediate and measure to all these long pending demands and to secure a bright future for the youth of Nashara. Thank you, sir. I call upon the Honorable MLA of Bahusort, Jammu, Wasif Anjum to speak the House will maintain order. Honorable Speaker, sir,
respected Chief Minister, and my respected colleague of this House. Today, I, Wasifa Anjum, raised to represent the people of Bahu South Jammu, an area known for its heritage and growing communities, a constituency that share border with Pakistan and face unique challenges and opportunities. As we gather here, I will raise my voice on the 4 major problems in our area. Firstly, I would like to raise my voice on the major problem in our area, that is drainage system. Respected Speaker Sir, बारिश के मौसमों में पानी का जमना और फ्लडिंग सड़कों और घरों को बहुत इफेक्ट करती है। सड़कों में पानी भरने की वजह से लोगों की रूटीन पर बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। गलियों और बाजारों में अक्सर बहुत ज्यादा पानी भर जाता है। सड़कों में पानी भरने की वजह से ट्रैफिक होता है, जिसकी वजह से लोगों के हेल्थ रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। स्पीकर सर, मैं एजुकेशन के बारे में बात करना चाहूंगी। एजुकेशन और स्कूल का मसला भी बहुत सीरियस है। स्कूल में बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर इनकम्प्लीट है, लाइब्रेरीज और कंप्यूटर लैब्स की कमी है, और स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स तो है ही नहीं हमारे स्कूल्स में। स्टूडेंट्स के पास बेसिक रिसोर्सेज नहीं है, जिसकी वजह से उनकी एजुकेशन और टैलेंट का प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है। यूथ को अपने पोटेंशियल एक्सप्लोर करने का मौका नहीं मिलता है, जो लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। रिस्पेक्टेड स्पीकर सर, टूरिज्म पोटेंशियल भी बहु साउथ जम्मू के लिए लाइफ नेग्लेक्टेड है। इस इलाके में पुराने टेम्पल्स और हेरिटेज साइट्स हैं, जो बहुत हिस्टोरिक और सीनिक हैं, लेकिन इन साइट की प्रॉपर मेंटेनेंस और प्रमोशन ना होने की वजह से टूरिज्म का पोटेंशियल पूरा यूटिलाइज नहीं हो पा रहा है। जो लोग अपनी जॉब अपॉर्चुनिटीज यहाँ से क्रिएट कर सकते थे, वो लोग अपनी जॉब अपॉर्चुनिटीज को भी क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं। ये नेग्लेक्टेड इकोनॉमी और कल्चरल डेवलपमेंट दोनों के लिए एक बहुत बड़ा लॉस है। रिस्पेक्टेड स्पीकर सर, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर और प्रॉपर वेस्ट मैनेजमेंट। क्लीन ड्रिंकिंग वाटर और प्रॉपर वेस्ट मैनेजमेंट भी लोगों की लाइफ के लिए बहुत बड़ा मसला है। पानी की क्वालिटी इनकॉन्स्टेंट है और गार्बेज कलेक्शन का सिस्टम बहुत वीक है। इसकी वजह से पब्लिक हेल्थ और हाइजीन पर बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है। रिस्पेक्टेड स्पीकर सर, अब मैं पब्लिक सेफ्टी के बारे में बात करना चाहूंगी। पब्लिक सेफ्टी और बेसिक फैसिलिटीज की कमी लोगों की जिंदगी को बहुत अफेक्ट कर रही है। स्ट्रीट लाइटिंग का इशू, इनएडिक्वेट पॉलिसीज, सिक्योरिटी गैप्स की वजह से लोग अक्सर अनसेफ फील करते हैं। खासकर वुमेन्स हमारे वहां की बहुत अनसेफ फील करती हैं, जो कि उनकी रूटीन और कम्युनिटी कॉन्फिडेंस को डिस्टर्ब करता है। रिस्पेक्टेड स्पीकर सर, हमें इन चीजों की सॉल्यूशन चाहिए। I argue the government to provide better infrastructure, education, tourism potential, clean drinking water and public safety in our area. Let us work together to make brighter future for our constituency. Thank you for listening to me. The chair now recognize the Honorable MLA of East Jammu, Ayaan Fatima. You may place your views before the House. Honorable Speaker Sir, respected member of this House, I put our rights today as the MLA of Jammu East, not merely to speak, but to place on the records the genuine concern of my people. Respected Speaker Sir, Jammu East is not just a constituency on a paper. It's a living reality of daily wage workers, women, senior citizens, and young people full of dreams, but unfortunately, those dreams are under pressure. Honorable Speaker, today I would like to talk about 3 major issues: employment, healthcare facilities, and educational system. Respected Speaker, Jammu East में जो सबसे बड़ा मसला है, वो है employment का। हमारे जवान डिग्री हाथ में लेकर घूम रहे हैं, उनके पास डिग्री है, टैलेंट है, दिमाग है, लेकिन फिर भी उन्हें एम्प्लॉयमेंट का मौका नहीं मिल रहा। जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत ही लिमिटेड हैं। इसलिए हम डिमांड करते हैं कि जम्मू ईस्ट के यूथ के लिए ज्यादा से ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट की जाए। ऑनरेबल स्पीकर, हमारे यहाँ के लोगों को बेसिक हेल्थ केयर फैसिलिटीज तक ठीक से प्रोवाइड नहीं की जा रही। सीटी स्कैन और दूसरी जरूरी मशीन्स के लिए लोगों को लंबी लाइंस में इंतजार करना पड़ता है, और अगर कोई मशीन खराब हो जाती है तो हमारे
बड़े एरिया में आज तक एक फुल्ली इक्विप्ड ट्रॉमा सेंटर नहीं है। हार्ट अटैक एंड इमरजेंसी के केस में हर एक सेकंड कीमती होता है, लेकिन हमारे लोग उस कीमती सेकंड में शहर से बाहर भेजे जाते हैं। पीईटी स्कीम जैसी बहुत सी जरूरी चीजें और मशीन्स जो कैंसर पेशेंट के लिए ट्रीटमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, या फिर तो वो बहुत लिमिटेड है या फिर तो अवेलेबल ही नहीं है। रिस्पेक्टेड स्पीकर सर, हमारा एजुकेशनल सिस्टम न सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर में बल्कि पूरी इंडिया की कई जगहों पे बहुत ही वीक है। कभी प्रैक्टिकली नहीं होती, कुछ भी नहीं किया जाता, सब कुछ बोर्ड पर समझाया जाता है। कहीं गवर्नमेंट स्कूल्स और कई प्राइवेट स्कूल्स में ना ही तो कंप्यूटर लैब्स हैं और ना ही तो साइंस लैब्स हैं, और जहाँ लैब्स हैं वहाँ साइंस लैब्स तो खुलते ही नहीं, और कंप्यूटर लैब्स में सिर्फ बच्चों को अपना नाम ही टाइप करवाया जाता है। उसके बाद फिर वही पुराना थ्योरेटिकल सिस्टम फॉलो करवाया जाता है। आज का जमाना एआई का और रोबोटिक्स का है, लेकिन हमारे सिलेबस में एआई का जिक्र तक नहीं है, रोबोटिक्स तो दूर की बात है। सच तो ये है कि हमारा एजुकेशनल सिस्टम आज ब्रिटिश ईरा के तरीकों पर चलाया जा रहा है। ब्रिटिशर्स को इंडिपेंडेंट थिंकर्स नहीं चाहिए थे, उन्हें सिर्फ क्लर्क्स चाहिए थे, इसलिए उन्होंने वैसा ही सिस्टम बनाया और वैसा ही सिलेबस बनाया। ब्रिटिशर्स ने इतना बुरा सिस्टम बनाया कि आज तक हम उन्हें उसी सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं। बदकिस्मती से हम आज भी उसी आउटडेटेड सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं। इसलिए ऑनरेबल स्पीकर सर, मैं इस हाउस से रिक्वेस्ट करती हूँ कि हमारे एजुकेशनल सिस्टम में रिफॉर्म्स लाए जाएं और सिलेबस चेंज किया जाए और बच्चों को फ्यूचर रेडी स्किल्स सिखाए जाएं, ताकि वो आने वाले टाइम के लिए और देश के लिए स्ट्रॉन्ग। I call upon the leader of opposition, Ayaan Malik, convince yourself to the subject. Honorable Speaker, respected member of the House, I, Mohammad Samar Malik, rise today as a leader of opposition, representing the voice of millions of young citizens who dream, who struggle, and who deserve a better future. Honorable Speaker, our role is not to oppose for the sake of opposition. Our role is to ask questions, to correct, and to safeguard democracy. Honorable Speaker, today I demanded 3 major reforms. And the first demand is youth-centric government. India is a world youngest nation, yet our policies merely reflect the dream of our youth employment, modern skills, and mental health support. Respected Speaker, and my second demand is transparent and accountable government. Every ministry, finance, education, affairs must be operated to compete. Transparency, no country can grow when decision must be taken without any clarity and accountability. Honorable Speaker, my third demand is global search opportunity. Whether it is technology, research, entrepreneurship, or diplomacy, our youth must be prepared to compete at global level, not just local or national level. Our opposition is not against individual, it's against inequality, corruption, unemployment, and outdated system. In this house prove that democracy is still alive, powerful, and youth-led. As a leader of opposition, I pledge to stand